Now coming to the next type of anemia we are going to talk about is iron deficiency anemia. So most common type of anemia is iron deficiency anemia. और ब्लड आयरन में किस फॉर्म में होता है? आयरन इन ब्लड इज इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन. ट्रैवल किस फॉर्म में करता है? फेरी में बैठ के. तो फेरिटिन, सॉरी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन. ट्रैवल्स इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन. और स्टोर होता है टीन के डब्बे में, तो फेरिटिन. किसमें स्टोर होता है? फेरिटीन. और एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में थ्रू DMT1, DMT2. दीज आर द ट्रांसपोर्टर, डाइवेलेंट मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्टर्स. DMT1, DMT2 ड्यूडेनम से उसको खींच के लाती है. ठीक है सर. चलो उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस कैसे बनाओगे इसका. सर दो चीजें हाई है, बाकी सारी चीजें कम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ऑन द CBC रिपोर्ट. CBC report with the peripheral smear to know the type of anemia. So TIBC and FEP is high, rest everything is low. How simple it is. TIBC, FEP is high, rest everything is low. Again, I want to repeat, in the iron deficiency anemia, total iron binding capacity or free erythropoietin is high, rest everything is low. Hemoglobin, serum, erythropoietin, everything is low. Causes dietary deficiency. Most common veg eaters, जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होने लगता है. एक्सेसिव ब्लड लॉस, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हुआ तो acute blood loss. Now hemoglobin is less than. What you will do? Will you give the medication or you will give the blood product? And if needed to give the blood product, which type of blood group? Blood product you will give, and you know this answer. Hint, I'll give you +4 degrees Celsius is storage temperature of that blood group. Blood product. You know this answer. You know this answer. You know this answer. I know you know. You have to answer. You have to answer. You have to answer. You have to answer right now, sir. I don't want to. RDW भी बढ़ता है. Yes. RDW. Random distribution width also. Random distribution width also. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. या PRBC देना. और पैराफिलर स्मेयर पे क्या देखने मिलेगा? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल और पेंसिल शेप सेल. नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल. सो हाइपोक्रोमेटिक RBCs, hypochromatic RBCs plus pencil shape RBCs are feature of iron deficiency anemia. Special feature is Kolyanokia and chiliosis. Kolyanokia, you see, this spoon shaped nail is called as Kolyanokia. This spoon shaped nail is called as Kolyanokia. This spoon shaped nail is called as what, sir? Kolyonikia. Spoon shaped nail is called as what, sir? Kolyonikia. Spoon shaped nail is called as what, sir? Kolyonikia. And chiliosis, you will see there will be inflammation around the lips. Now, if hemoglobin is less than 7, PRBC will give. Yes. If hemoglobin is more than 7, then what treatment you will give the patient of iron deficiency anemia? Orally ferrous sulfate and IV ferrous sucrose या फिर कार्बोक्सी maltose. ठीक है सर. फेरस सुक्रोज या फिर कार्बोक्सी मैल्टोज दे सकते हो IV रूट से, बट ओरली देना है तो फेरस सल्फेट वी कैन गिव प्लस आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स वी कैन गिव. इन द PSM only we have studied about the iron deficiency, iron folic acid tablet. In this 60 mg is iron, 500 microgram is folic acid, my dear friends. So this is all a combined summary of iron deficiency anemia. Most common dietary cause होता है. सारी चीजें कम होती है, 2-3 चीजें बढ़ जाती है, जिसमें RDW बढ़ता है, TIBC, FEP बढ़ता है. Histopathic smear तैयार करेंगे, hypochromic cell you will see, pencil shape RBC you will see, हाथों में देखेंगे तो you will see the Kolyonikia, and chiliosis also see near the gums, my dear friends. Plus other things. Yes, Plummer-Vinson syndrome we have studied. And plus in the treatment, if hemoglobin is less than 7, we'll go for PRBC. If hemoglobin is more than 7, then we'll give carboxy maltose. Then you can give that ferrous sulfate, ferrous sucrose. मुंह से देना तो ferrous sulfate you can give. And if you have to give the IV route, you can give the sucrose. Done. IV से sucrose दे सकते हो और मुंह से sulfate दे सकते हो. Done.